Hello bachcho, let's see the question. So question says that on a square cardboard sheet of area 784 centimeters square, four congruent circular plates of maximum size are placed such that each circular plate touches the other two plates and each side of the square sheet is tangent to two circular plates. Okay, find the area of the square sheet not covered by the circular plates. Okay, so it is very easy. So हमें कहा गया है कि एक स्क्वायर प्लेट है, उसके ऊपर चार सर्कल्स हैं सेम शेप के. ओके, तो जो एरिया सर्कल्स के द्वारा कवर नहीं होगा स्क्वायर शीट पे, वो एरिया हमें निकालना है. सो लेट्स सी द फिगर. सो हेयर वी हैव द फिगर. तो ऐसा कुछ हमें बोला हुआ है, एक स्क्वायर प्लेट है, ये जो ग्रे कलर की दिख रही है हमें, इट इज स्क्वायर प्लेट. उसके ऊपर हमारे पास चार सर्कुलर प्लेट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट एरिया ऑफ circle. Okay, so area of circle is pi r square. Okay, where r is the radius of the circle and pi is constant having the value 22/7, right? So हम area of circle use करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. Okay, now here how can we calculate this gray area? So basically सबसे पहले हमें स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा. Okay, which is given to us already. एंड उसके बाद हमें सर्कल्स का एरिया निकालना पड़ेगा. ओके, तो बेसिकली हम एक सर्कल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब चारों एक जैसे हैं. ओके, बट वी डोंट हैव द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, सो वी डोंट हैव दिस रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे आएगा? लेट्स सी. वी हैव गिवन दैट एरिया ऑफ स्क्वायर is equals to 784 centimeter square. Okay, this information is given to us and by using this information we can find the radius. So let's say अगर इसकी radius r है तो इसकी जो total side हुई it will be 4r, right? Because ये अगर r है radius तो इसका diameter हुआ 2r और दो diameter से मिलके इसकी side बनी है. Okay, क्योंकि ये edge to edge touch हो रही है तो it will be 4r. So area of square ये होता क्या है? It is side square. Okay, it is equals to 784, right? Now here side square, so side is 4r, so I can write 4r into 4r. Okay, 784, and from here I can say that it is 16r square is equals to 784. Okay, and from here I can say that my r square is equals to 784 divided by 16. Okay, and from here r square is equals to 16 से 784 हम cancel out कर सकते हैं. Okay, it will be 49, right? Now moving further, on taking root both side I will get r is equals to 7 centimeters. Okay, तो हमारा radius आ गया 7 centimeters. So we can find the area of one circle. Okay, so let me do this. Area of one circle is equals to pi r square. Okay, so I'm putting the value of pi and r. So I'm writing here area of one circle is equals to 22/7, which is the value of pi, into r square. So r is 7 into 7. Okay, because r square था इसलिए मैंने 7 दो बार मल्टीप्लाई कर दिया. Now from here I can say that area of one circle is equals to 7 get cancelled with this 7, we will left with 22 into 7. Okay, now in the next step I can write area of one circle is equals to 154 centimeter square. Okay, so 154 centimeter square is the area of one circle. We have four circles, okay, जो similar है. So I'm writing the area required. So the area required is
the square sheet not covered by the circular plate. Okay, so I'm writing here area of square sheet not covered by circular, let me write this thing over here, circular plates. Okay, let's say this is area A. It is equals to area of square plate minus area of circular plate. Okay, एंड एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट में हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज हमारे पास 4 सर्कुलर प्लेट्स हैं. ओके, सो एरिया ए विच इज द रिक्वायर्ड एरिया, ओके, it is equals to the area of square plate is 784, okay, and minus 4 into area of one square plate. So one square plate का area है 154, this much centimeter square, right? So area will be equals to 784 minus, now 4 times 154, it is 616, okay, itna centimeter square. Finally I can write area is equals to 784 subtract 616, it is 168 centimeter square, and this is the required area which is not covered by the circle plate on the square plate. Hope you understood the solution. Thank you.